कॉस्टिंग प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कॉस्टिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। फिर हम इनकी पॉलिसी इम्प्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, और एक ब्रेनो रेशो के बारे में, वी हैव डिस्कस अबाउट द ब्रेनो रेशो एंड व्हाट डू यू मीन बाय द ब्रेनो रेशो, इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट ओवर लेक्चर विद दैट द कॉस्टिंग ऑफ एजुकेशन प्रोजेक्ट यूनिट नंबर 9। सो द टेक्निक फॉर कॉस्टिंग एजुकेशनल प्रोजेक्ट, क्या टेक्निक होगी कि हम एजुकेशन प्रोजेक्ट की जो है कॉस्टिंग को हम कौन सी कॉस्ट लगाएंगे। यू नो दैट कि वी आर यूजिंग वी जस्ट इकोनॉमिस्ट सेज दैट ये कास्ट वी मिनिमाइज द कास्ट, एंड हमारी दो तरह के हेड होते हैं, वन इज़ द यूटिलिटी एंड अदर वन इज़ द एक्सपेंडिचर। तो इकोनॉमिस्ट जो होते हैं उनकी यही अप्रोच होती है कि हाउ वुड वी मिनिमाइज ओवर एक्सपेंडिचर एंड हाउ वी मैक्सिमाइज ओवर यूटिलिटी। यूटिलिटी को कैसे मैक्सिमाइज करेंगे। इस तरह एजुकेशन एक यूटिलिटी फंक्शन है कि हमें एजुकेशन गेन करने से हमें यूटिलिटी मिलती है, हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो वो हमें सेटिस्फेक्शन कैसे गेन होगी, और उस सेटिस्फेक्शन को गेन करने के लिए हम जो कास्ट लगाएंगे, हाउ वी मिनिमाइज द कास्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, कि जिससे हमें बेनिफिट हो रहा हो। द टेक्निक्स कैन बी डिस्कस्ड अंडर द टू हेड्स, वन इज अनडिस्काउंटेड एंड सेकंड वन इज द डिस्काउंटेड। दो तरह की टेक्निक्स यूज हो रही हैं कॉस्टिंग फॉर एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए, वन इज द अनडिस्काउंटिंग टेक्निक एंड सेकंड वन इज द डिस्काउंटिंग। Let's see what do you mean by the undiscounting techniques. The use of discounting measure has declined in importance over the last few years. ये जो अनडिस्काउंट टेक्निक के जो मेजर्स हैं उनका जो यूज़ है वो डिक्लाइन कम होता जा रहा है, बिकॉज यू नो दैट कि यहाँ पे हर बंदा जो है अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है हर बंदे की, बेस्ट यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव। जब आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा या आप उस प्रोजेक्ट में आपको अनडिस्काउंटेड टेक्निक यूज़ करें जिसमें डिस्काउंट नहीं है, तो उस प्रोजेक्ट को हर कोई जो है वेव ऑफ करने की कोशिश करेगा, और इसलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है ओवर द फ्यू ईयर जो वो कम हो रही है। वेयर एज द टेक्निक्स बेस्ड ऑन डिस्काउंट कैश फ्लो एनालिसिस आर बिकेम वाइडली एक्सेप्टेबल। तो डिस्काउंटिंग टेक्निक्स के जिसमें हमने लास्ट पढ़ा था यूनिट नंबर 5 और 4 में, वी हैव डिस्कस अबाउट दैट कि डिस्काउंटिंग टेक्निक्स एंड डिस्काउंट में हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है और फ्यूचर वैल्यू, हमें फ्यूचर बेनिफिट ऑफ एजुकेशन क्या होगा। तो उस टेक्निक को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू अनडिस्काउंटिंग टेक्निक्स, बिकॉज देयर इज़ नो सच अ फार्मूला यूटिलाइज ऑन द अनडिस्काउंटिंग टेक्निक्स, बट द proper way and formulas used in discounting techniques. सो स्पेशली एट द फेडरल लेवल इन पाकिस्तान के केस में हम देखें तो अनडिस्काउंटिंग टेक्निक्स इंक्लूड सच एज मेजर एज द पे बैक पीरियड, वैल्यू एडिड एंड कैपिटल आउटपुट रेशो। द पे बैक पीरियड रेफर टू द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड इट इज़ क्रूड मेजर ऑफ प्रोजेक्ट वायबिलिटी। तो आप देखें इसके लिए हमें बहुत सारा बैकअप पे डाटा चाहिए होगा, बैकअप से हम डाटा लेंगे, फिर उसके बाद कैपिटल आउटपुट जो रेशो हम निकालेंगे कि हाउ मच द ह्यूमन कैपिटल वो जनरेट एंड आफ्टर यूटिलाइज दिस कैपिटल हाउ मच वी आउटपुट गेन। तो इसके लिए हमें डाटा चाहिए होगा। पे बैक पीरियड मीन के वैल्यू एडिट का मतलब कि एवरी मंथ जो है हमारे पास कितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं एंड हाउ मच वी आर अ कास्ट एवरी मंथ एंड एवरी ईयर। तो ये हमारे लिए खासा डिफ़िकल्ट हो जाएगा जो अनडिस्काउंटिंग टेक्निक्स के मेजर्स हैं, क्योंकि हमें वैल्यू एडिट का मतलब होता है एवरेज ईयर वी ऐड अप। तो इसमें ये भी हो सकता है कि एक बंदा अगर 2023 में वो ग्रेजुएट और 24 में डबल एंट्री हो जाए तो वो भी हमारे लिए इजीली नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ टेक्निक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि अनडिस्काउंटिंग टेक्निक को इतना अच्छा मेजर नहीं लिया जाता। According to the criterion, for the shorter the period for recovery, the more profitable is the project. So you know that I have already discussed with you that education is long run project, कि आप एजुकेशन गेन करेंगे उसके बाद आपके जो फ्रूट्स हैं वो आपको बहुत अरसे के बाद आपको वो फ्रूट्स मिल रहे होते हैं। बट in the case of this type of method which is used in the shorter period, जिसका हमें लॉन्ग रन का
इतना हमें यानी उसके बारे में हमें नहीं वायबल होते हम कि लॉन्ग रन में क्या होगा, बट हम उसकी शॉर्ट रन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट अगर हमारे शॉर्ट रन प्रोजेक्ट हों, जिस तरह हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या कुछ, और जिसका बेनिफिट भी हमें पता हो, कास्ट भी पता हो, वहाँ पे तो अनडिस्काउंटिंग टेक्निक यूज़ हो सकती है। लेकिन डिस्काउंटिंग टेक्निक के लिए फिर हमारे पास वो टेक्निक जो है, ये एजुकेशन जो लॉन्ग रन प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट तो हम बियर कर रहे हैं, बस उसके हमें बेनिफिट नहीं पता है, तो उसके लिए हम फिर ये जो टेक्निक है डिस्काउंटिंग टेक्निक वो यूज़ करेंगे। Value added is defined as the value of final project minus value of raw material, intermediate inputs, fuel supplies and utility extra। तो मैंने आपको बताया कि वैल्यू एडिड मेथड के अंदर ये होता है कि एवरेज ईयर हाउ मच वी कंज्यूम द रॉ मटेरियल and how much we consume the intermediate inputs student you know that ये जो you the final inputs mean those inputs which are finally utilized in their project, but some inputs are intermediate, like कि अगर आप पिज़्ज़ा खाने बाज़ार जा रहे हैं तो पिज़्ज़े के लिए यू नो दैट पिज़्ज़े के अंदर मीट भी होता है और बन भी होता है। तो ये जो बन हो गया या ये जो मीट है वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं। आफ्टर कंप्लीशन इंटरमीडिएट गुड्स जो हमारे पास से पिज़्ज़ा फाइनल होता है वो फिनिशिंग गुड्स होती है। तो इंटरमीडिएट गुड्स में जो मीट आप यूज़ कर रहे हैं एक बर्गर के अंदर, तो वो डबल एंट्री हो जाएगा। एक दफ़ा मीट आपने अपनी जीडीपी में यहाँ पे डाल दिया, एक दफ़ा वही मीट आप जो है ना बर्गर के बाद डाल रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज एग्जिस्ट इन दिस मेथड। एंड फ्यूल सप्लाई एंड यूटिलिटीज, ये जो बिल्स होते हैं बिजली के और ये सारे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं, तो ये अनडिस्काउंटिंग में आते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द वैल्यू दैट हैज़ एडिड टू द इकोनॉमी बाय द लेबर एंड कैपिटल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो ये दीज टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएट इनपुट्स एंड दीज ये वैल्यू एडिड में आते हैं और ये इनकी डबल एंट्री काउंट होने का सिस्टम जो होता है, डबल एंट्री होने की वजह से दिस मेथड इज़ नॉट वायबल फॉर ओवर इकॉनमी बिकॉज अनडिस्काउंटिंग टेक्निक्स में जब ये वैल्यू एडिड मेथड यूज़ करेंगे तो वैल्यू एडिड का मतलब ये होगा कि हम डबल काउंटिंग कर देंगे। एक ही प्रोडक्ट को अगर उसको मेड करने में 3-4 साल लगते हैं, जिस तरह हम एक स्टूडेंट को बीएस करा रहे हैं तो मैक्सिमम 4 ईयर रिक्वायर्ड होते हैं, एमफिल में 3 ईयर रिक्वायर्ड होते हैं और फॉर पीएचडी 5 ईयर। तो अगर उसमें ये वैल्यू एडिड प्रोसेस यूज़ करेंगे तो ये दिस इज़ द नॉट वायबल for over calculation method of cost. The value added may be has a gross and net. The former include the payment for taxes, interest, rent, profit and depreciation. Depreciation student the wear and tear of the assets which are used in this प्रोजेक्ट, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। रेंट वी गेन अ रेंट फ्रॉम द लैंड एंड इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच आर इन्वेस्टमेंट इन दिस प्रोजेक्ट एंड टैक्सेस, ये सारी चीज़ें। तो लेटर एक्सक्लूड द डेप्रिसिएशन ओनली। तो डेप्रिसिएशन जो है वो उसको हम एक्सक्लूड करके बाकी ये सारी चीज़ें इसमें ये रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट आ रही होती हैं। The capital output ratio is defined as the average value added produced per unit of capital expenditure। यानी हमारे पास जो आउटपुट आ रही है, नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल वी इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट, दिस इज कॉल्ड द कैपिटल आउटपुट रेशियो। एंड द डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस टेक्निक, वो ये जो अनडिस्काउंटिंग में के बारे में हमने डिस्कस किया, बहुत ब्रीफली किया। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिस्काउंटिंग कैश फ्लो एनालिसिस टेक्निक consists of the net present value worth NPV, the internal rate of return IRR and benefit cost and modified Bruno ratio। तो ये स्टूडेंट हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट दैट NPV net present value is equal to we know that the future value is equal to present value divided by 1 plus r की power n, that is the discounted formula we have already discussed in chapter 5 जिसको हमने किया था। वो टेक्निक वो यहाँ पे यूज़ करेंगे जिसको मॉडिफाइड करके हम ब्रेनो रेशो भी कहते हैं।
The net present value is defined as the difference between the discount cost and discount benefit. You know that discount benefit minus discount cost divided by 1 plus R key ratio, and we have already discussed in lot in the unit number 5. We if you read the unit number 5, you have discussed we have discussed about lot of about is in this formula for the project using the discount rate that accurately रिफ्लेक्ट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन इकॉनमी। तो वो हमें बता रहा होता है कि ये जो हम कैपिटल इकॉनमी के अंदर यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द बीइंग द सेक ऑफ गेटिंग द ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंड हायर एजुकेशन और स्कॉलर्स पीएचडी स्कॉलर, तो उसके लिए फिर हमें कितना कैपिटल, हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द, ये हमें अपॉर्चुनिटी कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेस्ट फॉर गॉन, कितना हम इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें उसका क्या बेनिफिट हो रहा है। द प्रोजेक्ट इज वायबल इफ द एनपीवी एट द गिवन रेट ऑफ डिस्काउंट इज पॉजिटिव। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है, जो हमारा डिस्काउंट रेट वो पॉजिटिव हो, जो हमारी कॉस्ट से बेनिफिट ज़्यादा हो, तो ये दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी वायबल फॉर ओवर इकॉनमी, अदरवाइज द प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। इस प्रोजेक्ट को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। The benefit cost ratio is defined as the ratio of discount benefit stream and the discount cost stream. If the ratio is greater than 1, the project is acceptable. हम benefit divided by cost करेंगे। If you know that it over benefits are 4 and over cost is 2, 4 divided by 2, answer is 2, which is greater than 1, we accept it. If our benefit is you know that if our benefit is 0.5 and cost is 2, so it's mean that this is the less than 2, तो less than 1, this project is rejected। तो हमें वही प्रोजेक्ट चाहिए जिसका बेनिफिट मोर एज कम्पेयर टू कॉस्ट, द रेशियो ऑफ benefit and cost is equal to 1। The internal rate of return is defined as the rate of interest rate, which if discount equalize the present value of benefit and cost stream over the life of project. So in this project it is acceptable if the internal rate of return is greater than discount rate अपॉर्चुनिटी का। तो हम देखेंगे कि हमें जो रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है हमें वो जो है डिस्काउंट रेट से ग्रेटर है, क्योंकि डिस्काउंट रेट का मतलब होता है कि हम एजुकेशन को छोड़ दें या उस प्रोजेक्ट को छोड़ दें। इफ ओवर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है इन लॉन्ग रन इट्स रिटर्न इज मोर एज कम्पेयर टू कास्ट वी इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। अगर ग्रेटर है तो इट्स मीन दैट over rate of return is greater than as compared to discount rate, it means over opportunity cost of capital in economy, कि इस कैपिटल को हम इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करें और इसकी वजह से लॉन्ग रन में हमें जो है मोर एंड मोर बेनिफिट वी गेन फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। The modern benefit cost analysis introduced the innovation in project appraisal system through processing the improvement in the valuation inputs. The technique has been developed to calculate use a shadow and accounting price of planning। तो यहाँ पे हम जो है शेडो या अकाउंटिंग प्राइस जो होगी, जो हम जो मार्केट की प्राइस होगी उसको देख के हम प्लानिंग करेंगे। डियर स्टूडेंट, शेडो प्राइस मीन इफ ओवर एक्चुअल प्राइस एट दिस प्रोजेक्ट एट द टाइम इज से कि 4 है किसी चीज़ की प्राइस, तो हम शेडो करके उसको 10 करेंगे, बिकॉज यू नो दैट द इन्फ्लेशन की वजह से हमारी जो करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है और दिस प्रोजेक्ट में भी स्टार्ट आफ्टर लॉन्ग पीरियड। तो वहाँ पे हम इसको डिस्काउंटिंग जो है प्राइस को टेक्निक को डेवलप करके हम शेडो प्राइस रखते हैं, एक्चुअल प्राइस हम नहीं रखते हैं, ताकि वो हमारा प्रोजेक्ट जो है वाइबल और बेनिफिशियल हो फॉर द ओवर इकोनॉमी। The three main methodology can be identified in this context. There are 3 methodologies जो यूज़ हो रही हैं प्रोजेक्ट के लिए। The little mirrorless LM approach is called the OECD approach. The second one is the UNIDO, United Nations Industrial Development Organization approach, and third one is the Line, Square and Van der Tek अप्रोच इज आल्सो यूज बाय वर्ल्ड बैंक। तो ये 3 तरह की अप्रोच है। ये डियर स्टूडेंट बेसिकली ये है कि ये जो मेथडोलॉजीज हैं इनको क्यों यूज़ किया जाता है। जब हम प्रोजेक्ट एक बनाते हैं तो हमें उसकी शेडो प्राइस रखनी पड़ती है। उसका फेस 1 होता है, 2 होता है प्रोजेक्ट का, PC 1, PC 2, 3 एंड 4। तो उस PC के
प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले हम PC4 स्टार्ट करते हैं ताकि हम एलोकेशन ऑफ लैंड करें। उसके बाद उस प्रोजेक्ट को वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होता है तो उसके अंदर जब हम टेंडरिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें जो प्राइस वो शेडो प्राइस रखनी पड़ती है जी, बिकॉज वी नो दैट इन फ्यूचर द depreciation of money is more and more। जब depreciation हो रही होती है तो you know that the devaluation of money it's mean that inflation rate is high। तो वो जो गुड जो हम वहाँ पे यूटिलाइज करेंगे उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो इसके लिए हम शेडो प्राइस को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए फिर हमारे पास ये प्रोजेक्ट जो होता है इसके लिए 3 मेथडोलॉजीज जो है हम यूज़ करते हैं। द लिटिल मिरर्स जो OECD जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस अप्रोच को यूज़ किया है। एंड सेकंड वन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन ने भी इस सेकंड अप्रोच को यूज़ किया है। थर्ड लाइन स्क्वायर डार्क टाक इज़ यूज बाय द वर्ल्ड बैंक जो है ना इसकी अप्रोच है। द कॉस्टिंग प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, all the projects needing to approval by the central development working party। तो जितने भी हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में बनते हैं। एग्जीक्यूट बाय कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल NCNEC have been appraise the project appraisal section of planning and development division गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो अगर कोई नया स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, तो वहाँ पे कोई बड़ा एजुकेशनल प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो इसके लिए पहले PC1 PC2 PC3 एंड PC4 देन दिस प्रोजेक्ट इज वर्किंग अंडर द पार्टी CDWP। उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में जाता है और उसका अप्रूवल जो है प्रोजेक्ट का जो कास्ट बेनिफिट एनालिसिस है उसको चेक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीज़न को ये प्रोजेक्ट दिया जाता है जो उसके प्रोजेक्ट अप्रूवल बनाती है जिसमें कॉस्ट और बेनिफिट को देगा। थ्रू द सेंट्रल प्लानिंग एजेंसी हैज़ नॉट येट डिटरमाइंड एनी गाइडलाइंस फॉर द प्रोजेक्ट एवल्यूएशन। The project approval section does undertake some economic and social cost benefit analysis of the project under this ST अप्रोच। तो हमारी जो कास्ट द बेनिफिट एनालिसिस को एस्टिमेट करने के लिए वो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग होती है जिसमें सम यू नो दैट सम प्रोजेक्ट आर कास्ट बेस्ड प्रोजेक्ट लाइक एजुकेशन प्रोजेक्ट एंड वी मेक अ पार्क इन some areas that benefit we can't be measured in this project, but some project we can measure the benefit on the spot and cost of project also available on this area। तो उसको हम इजीली जो मेजर कर सकते हैं लाइक हम बिल्डिंग बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, तो उसका तो हम कर सकते हैं। बट सम प्रोजेक्ट लाइक पार्क है या फिर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, दीज टाइप ऑफ प्रोजेक्ट वेयर दीज गुड्स आर कॉल्ड द पब्लिक गुड्स। और पब्लिक गुड्स को अप्रोच करना और इनको मेजर करना इनके बेनिफिट इट इज़ सो डिफिकल्ट फॉर अस एट द प्रोवेंशनल लेवल। और इनको पब्लिक गुड्स लाइक एजुकेशन इज आल्सो अ पब्लिक गुड्स वी नो दैट। तो इन पब्लिक गुड्स कंपलसरी एजुकेशन इज़ अ पब्लिक गुड। तो इनके बेनिफिट वो को मेजर करना इट इज़ too much difficult task for us। Only we calculate the cost of this project and this is enough for our project approval। However, the approval for the project is carried in a ad hoc fashion taking in account of few technical consideration। However, the foreign funded project are approval using the discounted cash flow analysis। तो जो हमारे डोमेस्टिक होते हैं उनके लिए हम कोई भी टेक्निक, बट जो फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट होते हैं लाइक UNDP हमें कोई प्रोजेक्ट दे रहा है, यूनेस्को हमें दे रहा है, यूनिसेफ दे रहा है फॉर द चिल्ड्रन, तो उसके लिए हमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस को यूटिलाइज करना पड़ता है। द फर्स्ट स्टेप इज ये स्टेप्स हैं कि जब हमारे पास प्रोजेक्ट आ जाता है तो हाउ एंड can we execute this project and how we can get a benefit of the project। The first step is to drive the cash flow based on the annual statement of cost and benefit of the project। ये फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पे हम एनुअली जो स्टेटमेंट जारी करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर PC4 मीन्स व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड दिस इज़ द indoor task of the Ministry of Finance and Planning which they calculate their cost and benefit of the project। The next step is involve the subtraction of transfer payments
ड्यूटीज सब्सिडीज़ वगैरह फ्रॉम द कैश फ्लो। सेकंड स्टेप में जो होता है ये ग्राउंड पे वर्क होता है और वहाँ पे जो पेमेंट्स होती हैं ड्यूटीज सब्सिडीज़ वगैरह कैश फ्लोज उनका होता है। इनपुट्स एंड आउटपुट इज डिवाइडेड इनटू द traded and non-traded item. Traded goods are the values if imports at the FOB price of if exported are convert into the domestic currency using the official exchange rate. तो वो जो हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं बाहर से प्रोजेक्ट के लिए गुड्स आती हैं उनको एक्सचेंज रेट जो हमारा डोमेस्टिक उनको डॉलर को रुपीज़ के साथ कन्वर्ट करके फिर हम अपने प्रोजेक्ट को इन बिलियंस और ट्रिलियंस में हम देख रहे होते हैं। तो जो ये ट्रेडेड गुड्स जो हम द गुड्स कैन गेट फ्रॉम different entire sources, and the non-traded goods are usually value added their market price exclusive of any transfer payments। तो उसको हम अपने डोमेस्टिक करेंसी में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। बट द गुड्स दैट ट्रेडेड फ्रॉम another country, first of all we convert the payment into the rupees from the dollar by using the fixed exchange rate or floating exchange rate. Then we discuss in construction project the use of specific conversion factor is also made to evaluate the construction inputs. The remaining non-trading input except electricity are the valued at market price and multiplied by the standard conversion factor, which is also a रेसिप्रोकल ऑफ द एक्सचेंज रेट। तो ये हमारे पास जो नॉन ट्रेडेड लाइक इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट इन अवर कंट्री उसको हम डोमेस्टिक में और ये रेसिप्रोकल एक्सचेंज रेट का इट्स मीन दैट के ट्रेडेड गुड्स जो होती हैं दैट गुड वर ट्रेडेड फ्रॉम अदर कंट्रीज उसका तो हम एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट डोमेस्टिक है उनको अपने मनी में ही उनका करेंगे। द पर्पज ऑफ दिस एक्सरसाइज इज कन्वर्ट ऑल द नॉन ट्रेडेड कॉस्ट एंड बेनिफिट इनटू द बॉर्डर प्राइस इक्वलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी जो प्राइस हैं उनको इक्वलाइज कर देंगे ट्रेडेड गुड्स और नॉन ट्रेडेड गुड्स की। 10 to 20% premium on the foreign exchange component of the project is used allow the scarcity of foreign exchange in a country. In the absence of shadow price, the cost utilities such as gas, electricity and other fuel is taken to be double that of the market price। ये स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि शेडो प्राइस के लिए यू नो दैट के वी take we artificially increase the price of this type of good because you know that the inflation की वजह से जो है अगर प्रोजेक्ट लॉन्ग रन हो जाए तो हम जो है ना शेडो प्राइस को डिस्कस करते हैं ताकि वो प्रोजेक्ट के लिए जो है वो जो है हार्मफुल ना हो। आफ्टर इवेल्युएटिंग ऑल द इनपुट्स and outputs in terms of their shadow price or the foreign exchange, the three measures of the discount cash flow, internal rate of return MWV and BC ratio, Baumol ratio are implied to arrive the viability or otherwise of the project। जब ये चीज़ हो जाती है जब हम ये चीज़ों को जो है डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं नॉन ट्रेडेड गुड्स को इक्वलाइज कर देते हैं देन फिर हम उसके ऊपर ये तीन तरह के मेथड यूज़ कर सकते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या बीसी जो रेशो है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, आर आल्सो इम्प्लाइड टू अराइव द viability of otherwise of the project। In Pakistan, usually the current cut-off rate of industries is 15% and the 12% for other sector include education। तो पाकिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्ट की मिनिमम रेट जो है वो 15 है और एजुकेशन के लिए जो है वो another part of the basic test of viability is sensitively analysis। In the recent years, it has become important to calculate another ratio, the domestic resources cost divided by modified Barono ratio for appraising the import substitution and export promoting product। तो ये देखेंगे हमारी अपनी जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं लाइक के हमारी जो न्यू इंडस्ट्रीज़ बॉर्न होती हैं उनको वो करने के लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब ये है कि वो दोज गुड्स विच आर इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज उनको सब्सटीट्यूट करके इट प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक वे तो उनको कैसे प्रोमोट करें। और एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है हमारी गुड्स जो है फॉरेन में कैसे बिकें। तो उसके लिए फिर
हमारे पास एक नई रेशो आई है जिसको मॉडिफाइड बरोनो रेशो कहते हैं। टू कैलकुलेट दिस रेशो द डेटा ऑन द फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट हैज टू बी ऑब्टेन। तो इसके लिए डाटा हमें चाहिए होगा। द डाटा शुड आल्सो बी ऑब्टेन ऑन द फॉरेन एक्सचेंज कॉस्ट नीड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। देन द डोमेस्टिक करेंसी कॉस्ट ऑफ द नॉन ट्रेडेड आइटम नीड टू बी ऑब्टेन। पहले हमें फॉरेन का डाटा चाहिए होगा और उसको कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग द एक्सचेंज रेट लाइक फिक्स एक्सचेंज, फ्लोटिंग, रियल एंड नॉमिनल एक्सचेंज रेट। एंड देन वही डोमेस्टिक करेंसी कॉस्ट जो है नॉन ट्रेडिंग आइटम की वो हम कैलकुलेट करेंगे। वी कैन नाउ prepare the foreign exchange net benefit stream and domestic currency cost stream, which is also then separately discounted at same discount rate, which is mentioned earlier, is usually 15% for the manufacturing sector and 12% for the other sector. ये 15% जो है मैन्युफैक्चरिंग लाइक इंडस्ट्री लाइक we say that the manufacturing industry is where the goods and services produced and the other sectors में हम देखें एजुकेशन के लिए 12% है। The last step is to calculate the ratio of present worth of domestic currency cost and it is rupees for realizing the foreign exchange benefits and present worth of the net foreign exchange benefit in dollar। तो फिर उनका हम रेशो निकालेंगे जो डोमेस्टिक एंड फॉरेन है। तो उससे जो हमारे रेशो आएगी, द रेशो इज लेस देन द शेडो एक्सचेंज रेट, द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल अदरवाइज नॉट। तो ये अगर रेशो जो कास्ट और बेनिफिट की रेशो कम आए शेडो से तो हमारा प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज दिस प्रोजेक्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एनी पर्पस। इम्प्लीकेशन इन द यूज ऑफ प्रोजेक्ट अप्रूवल टेक्निक इन पाकिस्तान। तो ये जो प्रोजेक्ट अप्रूवल टेक्निक्स है इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? आफ्टर एन एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रूवल रिपोर्ट ऑफ द financial institution, it was observed that all of them undertake the financial appraisal analysis to measure the project viability in addition to technical and managerial commercial feasibility। तो उसको हम देखेंगे कि ये कमर्शियल इसको कैसे यूज़ करना है और जब हमारे पास ये टेक्निक को यूज़, नो डाउट द फाइनेंशियल अप्रूवल इज डन वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली, both comprehensive and thoroughly, but have they developed oriented financial institutions, the economic effect of the investment undertaking through their lending activity are not given importance। तो यहाँ पे हमारा वो प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट जब अप्रूवल वो हम कैलकुलेट करके उसको फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को हम चेक करेंगे। A very crude and partial measure of the economic analysis undertaken that bear the resemblance to methodologies used by the international financial agencies। तो फिर ये जो इसकी टेक्निक से जो हमारे पास आउटकम आएंगी उसको हम जो है मैथडोलॉजीज जो है उनके ऊपर ये जितनी भी फाइनेंशियल एजेंसीज हैं लाइक वर्ल्ड बैंक है, IMF है, तो ये जो 3 तरह की टेक्निक को यूज़ करके वो इस प्रोजेक्ट अप्रूवल को लॉन्च करता है। दिस में बी ड्यू टू द फैक्ट दैट द स्टाफ मेंबर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन आर नॉट ट्रेन इन द यूज ऑफ दिस लेटेस्ट methodology in costing project and also some institution have only a recent joined the family of development banking institution in country। तो ये जो है ना ये टेक्निक्स खासी डिफ़िकल्ट हैं और जो सम कंट्रीज़ लाइक डेवलप कंट्रीज़ वहाँ के एम्प्लॉयज़ को इन टेक्निक्स की हाव नहीं है तो वो फिर जो है ना लेकिन सम बैंक्स को ये यूज़ करते हैं। तो इस टेक्निक ये कॉस्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स हैं, दीज आर ऑल द टेक्निक्स because the benefit of education, you know that we can't be calculate the benefit of education and such a type of project। Another reason could be that no set of guidance for the approval of a project is available in a country। तो इसकी नहीं है which these institution could flow in any country। These guidelines have to be prepared by the central planning authority। Another important related factor is the absence of national parameters and shadow price without the meaningful economic and social analysis cannot be undertaken। तो ये शेडो प्राइस डियर स्टूडेंट हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यू नो दैट दिस शेडो प्राइस वैल्यूज इज़ नॉट अवेलेबल, दिस इज़ अज्यूम बाय अस। तो ये भी इस डिफ़िकल्टी होती है कि प्रोजेक्ट की टेक्निक के लिए हमें डाटा चाहिए होता है, वैल्यूज चाहिए होते हैं एंड दीज वैल्यूज आर नॉट अवेलेबल इन द सेंस
so that this is the difficulty of this project. Approach introduced by the government. The project approval section of the Planning and Development Division, the P&D of Pakistan, Government of Pakistan has however introduced some methodological approach in ex ante evaluation of the project. तो कुछ methodological approach जो है ना Ministry of Planning यूज़ करती है. The traditional cost benefit analysis has modified, and after using the UNIDO approach is also a crudest form over the last few years. तो अब जो है ना ये कास्ट बेनिफिट सिंपल जो टेक्निक्स है वो नहीं यूज़ होती है, बिकॉज दे आर वी कांट बी कैलकुलेट द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. तो हम ज़्यादा फोकस कास्ट पे करते हैं. तो उसके लिए फिर द टेक्निक दैट इज़ यूजेबल बाय UNIDO. A shift has now been made to new approach developed by Land Square Van der Tuck ST, which is also well known as the Belt Bank approach. तो फिर ये जो टेक्निक्स हैं इनको छोड़ के कौन सी टेक्निक को यूज़ किया जाता है? लैंड स्क्वायर जो वर्ल्ड और टेक है ये जो वर्ल्ड बैंक अप्रोच यूज़ करता है. रिलेटिंग टू द प्लानिंग सेक्शन द वर्किंग टू द ST मेथडोलॉजी. ST जो मेथडोलॉजी है इट कैन बी सीन दैट इट फर्स्ट स्टेज, इसका फर्स्ट स्टेज क्या है? विच डील विद द एफिशिएंसी एंड एनालिसिस इज अडॉप्ट बाय पाकिस्तान सिचुएशन. सबसे पहले इसमें एफिशिएंसी को देखा जाता है कि हाउ मच दिस इज द एफिशिएंट ऑफ द एलोकेशन ऑफ दिस. इन अदर वर्ड द ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज प्रेफरेंस इन द सेक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट. सबसे पहले उस जगह को उस चीज़ को यूज़ किया जाता है जहाँ पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज मोर एंड मोर हो. तो उस जगह पे एलोकेशन का मतलब ये है कि देयर आर अबंडेंट रिसोर्स अवेलेबल इन दिस एरिया. लाइक पाकिस्तान कंट्री है तो यहाँ पे लेबर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका. वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है तो वहाँ पे सबसे पहले ये देखा जाता है कि ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्स कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स. मतलब जिस तरह हम एक स्कूल बिल्ड कर रहे हैं तो हम देखेंगे पॉपुलेशन की तो ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से बेनिफिट हासिल कर सकती है. द सेकेंड स्टेज इन दिस मैथडोलॉजी डील विद द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ. फर्स्ट जो है वो ऑप्टिमलिटी है. सबसे पहले हम एफिशिएंटली इस प्रोजेक्ट को यूज़ करेंगे और हमें एफिशिएंटली आउटपुट मिलेगी. सेकंड में इसमें हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जब आउटपुट आ जाएगी यू नो दैट सम ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट कैन गेन फ्रॉम द प्रोजेक्ट. तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है. हाउ माइट we take a tax from the rich people and also distribute on the poor grounds. तो इस तरह फिर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. द लेटर अकॉर्डिंग टू न्यू अप्रोच fall in the realism of the social analysis rather than efficiency analysis. और जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी फिर हम सोशल एनालिसिस की बात करेंगे कि वी आर आल्सो फेसिंग द पोल्यूशन एंड सम सोशल इशूज लाइक एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, उसको हम देखेंगे. The issue of equitable distribution of income. Thus, if the objective of the government is to increase the growth of GNP, if the availability of foreign exchange permit this, then it is desirable that appraising a project, a premium is placed for the foreign exchange generation. This part of the second state, that is the incorporation of premium on the foreign exchange, is being followed in the simple form in Pakistan. तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि दिस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले हम एफिशिएंसी को देखेंगे कि हाउ एफिशिएंटली वी मेक बिल्ड अ इंडस्ट्री इन अवर कंट्री. आफ्टर इंडस्ट्री हम देखेंगे कि सम क्लासेस आर द हायर इनकम एंड सेकंड क्लास इज द लोअर इनकम. तो हायर इनकम जो क्लासेस हैं उससे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे बिटवीन. फिर हम जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो एफिशिएंसी के बाद हम इक्विटी की बात करेंगे कि ऑल द पीपल आर इक्वल. तो जिसकी वजह से जब हम इंडस्ट्रीज लगेंगी तो इसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन हो जाएगी, एयर पोल्यूशन हो जाएगा. इस नॉइस और एयर पोल्यूशन को वेव ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है वो जो पुअर लोग हैं, जो रिच पर्सन है, उनसे हमें जो है इन्वायरमेंटल टैक्स, सोशल जो कॉस्ट बियर कर रहे हैं लोग, उसके टैक्स लेना पड़ेगा. द सोशल एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट रिलेटिंग टू equitable distribution of income is not undertaking in पाकिस्तान. तो पाकिस्तान के अंदर तो इस तरह की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. द रीज़न इज अब्यूज देयर इज
shortage of trained staff for the application of methodology, and there is absence of social parameter and prices. तो यहाँ पे social prices भी हमारे पास नहीं है कि how much the social benefit of the industry we make a industry in this country, and how much we bear a social cost of this industry, because this industry pollute our environment and our people face a disease of somewhat. तो ये चीज़ नहीं है जिसकी वजह पाकिस्तान में इस methodology को however the few attempts has been made to calculate the shadow price, but the officially response to the acceptability or otherwise the analysis is not known. However, the equitable distribution of income is the major concern in the developing country like Pakistan, and introduce the equity consideration in project selection can be considered an important complement. तो इक्विटी की बात हो रही है स्टूडेंट्स के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात पाकिस्तान में भी हो रही है कि हाउ वी कैन reduce the hunger and poverty, and how we can equal distribution all the people. Equity and efficiency, we have discussed a lot about this equity and efficiency in I think unit number 6 or 5. We have discussed about the what is mean by the equity and what is mean the efficiency. You can see here, but here we can see that this project is very much focused on the equity and efficiency, that is it undertaking the comprehensive social analysis of the project. The need for the social pricing is फेल्ट मोर देन आवर. तो यहाँ पे हमें सोशल प्राइस चाहिए होगी जो पाकिस्तान में हम वी कांट बी एबल टू कैलकुलेट बिकॉज हमारा स्टाफ इतना एफिशिएंट नहीं है. वी कांट बी कैलकुलेट द social benefit of this project or social price of this project, but it is the fact that the calculation of social parameters is a difficult task, such a difficult task for us to calculate the social parameter of this project. This is because of the poor database and complexity associated with the estimation of these parameters. तो ये पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए हमें डाटा रिक्वायर्ड होता है. देयर इज़ लॉट ऑफ इश्यूज. पाकिस्तान के अगर सिनेरियो में देखें तो देयर इज़ लॉट ऑफ इश्यूज अबाउट सोशल पैरामीटर्स, एंड हमें यहाँ पे डाटा अवेलेबिलिटी नहीं है. हमारा स्टार्ट ना एफिशिएंट नहीं है कि शेडो प्राइस का डाटा कैलकुलेट करे और हमें वो डाटा प्रोवाइड करे जिसको हम यूज़ करके हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें. द थर्ड वन इज़ द यूज़ ऑफ द बरेनो रेशो. ये जो है ना एक थर्ड मेथड है कि बरेनो रेशो को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. द वर्किंग ऑफ बरेनो रेशो by the project approval section can be demonstrated as the following. Inputs are grouped into the trade and non-trade cost and benefit. जो गुड्स हमारे पास ट्रेड हो रही हैं जिनकी ट्रेडिंग होती है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर लाइक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एंड नॉन ट्रेडिंग गुड्स विच आर नॉट ट्रेडेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो उनकी हम इनपुट्स को अलग अलग कर देंगे, उनके ग्रुप बनाएंगे. टू स्ट्रीम, the net foreign exchange benefit stream and domestic currency cost stream are prepared. तो ये हम फॉरेन एक्सचेंज जो आ रहा है हमारा बेनिफिट उसका, वो डोमेस्टिक जो कास्ट है करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी कास्ट जो हम करेंसी वो करेंगे प्रिंट करेंगे उसकी कास्ट के स्ट्रीम को कैलकुलेट करेंगे. देन प्रेजेंट वर्थ ऑफ बोथ स्ट्रीम एट appropriate ratio of discount are then calculated. To replicate of early discussion, the two method of calculation can be used. First, calculate the ratio between the present worth of domestic cost of realizing foreign exchange saving expressed in local currency and net worth foreign exchange saving expressed in foreign currency. तो सबसे पहले हम अपनी करेंसी की कास्ट को चेक करेंगे, जो हमारी नेट वर्थ आ रही है फॉरेन करेंसी की उसको उसका चेक करेंगे. द रेशियो इन द कंपेयर विद द शेडो एक्सचेंज रेट. एक हमने जो शेडो प्राइस बनाई होगी, मैंने आपको बताया था कि हमने एक्सपेक्ट करना है कि फ्यूचर में हमारा एक्सचेंज रेट ये होगा, उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे. एंड प्रोजेक्ट हैविंग अ रेशियो लेस देन अ शेडो एक्सचेंज आर एक्सेप्टेबल. तो हमारे प्रोजेक्ट की जो कास्ट बेनिफिट जो रेशियो आएगी इसकी, वो जो शेडो रेट है उससे कम आनी चाहिए, विच आर बेनिफिशियल फॉर आर. इफ़ द शेडो प्राइस दिस over calculated price is greater than the shadow price exchange rate ratio, तो ये this project is not beneficial for us. The second method to calculate the ratio with present worth of the domestic currency cost of realizing foreign currency saving in numerator and
present value of the net worth foreign saving in denominator both expressed in term of local currency. A ratio is less than one is viability measures. तो हम फिर ये इसकी रेशो देखें, ये जो फार्मूला आपके पास गिवन है, internal foreign exchange rate, present value of the domestic currency and cost of realizing foreign exchange saving, modified ब्रोनो रेट जो होगा वो एक्सचेंज रेट सेविंग जो प्रेजेंट वैल्यू होगी डोमेस्टिक करेंसी की हमारी कॉस्ट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो प्रेजेंट वैल्यू है फॉरेन एक्सचेंज रेट जो हमारी इन द शेप ऑफ यूएस डॉलर हमने सेविंग की है, मल्टीप्लाई बाय शेडो एक्सचेंज रेट के साथ जब कैलकुलेट करेंगे, ये हमारी ऊपर वाली जो डिनोमिनेटर है ये डोमेस्टिक करेंसी है विच आर वी प्रिंट इन ओवर द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. दिस इज़ द फॉरेन एक्सचेंज दैट आर कम फ्राम द फॉरेन कंट्रीज. जब इसका डिवाइड करेंगे और शेडो जो एक्सचेंज रेट हमने खुद बनाया है लाइक 200 300 उसे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड द मॉडिफाइड बरेनो रेशियो. The calculation does not affect the overall result, but in principle, it is desirable that application should be follow one of the two variant given above. Otherwise, the confusion arise. तो ये हमारे पास इसकी कैलकुलेशन से जो हमारे पास एक फिगर आएगा जिसको मॉडिफाइड बर्नो रेशियो कहते हैं, विच इज़ वायबल एंड यूजेबल फॉर ओवर प्रोजेक्ट. फर्दर स्टेजेस ऑफ कॉस्टिंग प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान. तो कौन कौन से स्टेजेस हैं कि पाकिस्तान की जो प्रोजेक्ट की फॉरकास्टिंग की जाती है, कॉस्ट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेटजीज फॉर कॉस्टिंग प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान. द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज need to be adopted in further for the costing the project. This is need for printed guidelines manual that are used by the approving agencies for selecting the project. The objective of guidelines manuals should be provide the practical basis of economic approval of project funded by the पब्लिक सेक्टर. तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, एक मैनुअल या गाइडलाइन बनाई जाती है, गाइडलाइन जिसको प्रिंट किया जाता है एजेंसी से, जिसका जो ऑब्जेक्टिव बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रैक्टिकल बेसिस पर इकोनॉमिक अप्रूवल के जो पब्लिक सेक्टर है उनको फंडिंग प्रोजेक्ट फंडेड जो होता है, हाउ मच दिस प्रोजेक्ट फंडेड, इसको फिर स्ट्रक्चरलाइज प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट and subject to be CDWP and NEC approval. These guidelines and manuals should be comprehensive and easy to follow that time is not wasted. तो इन मैनुअल को पढ़ के लोग जो होते हैं स्टाफ कैन अंडरस्टैंड दिस प्रोजेक्ट एंड नो टाइम वेस्ट एट दिस प्रोजेक्ट. तो दिस इज़ द बेसिक further strategies used in the Pakistan project. Number B. If any meaningful economic analysis is to be based on these guidelines, अगर ये हमारी इकोनॉमिक एनालिसिस मीनिंगफुल हो इन गाइडलाइन से, the shadow price of input and output has to be used in Pakistan. The national parameters and shadow discount rate, shadow exchange rate, shadow wage rate are based on the arbitrary assumption. ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इसको कैलकुलेशन करने का, बिकॉज यू नो दैट देयर इज़ नो डाटा अवेलेबल इन पाकिस्तान एंड वी कैलकुलेट द शेडो प्राइस ऑफ दिस प्रोजेक्ट शेडो वेज एंड, तो इसको हम एजम्पशन लगा के आर्बिटरी एक एजम्पशन लगा लेते हैं. इट इज़ फैक्ट दैट यूज़ ऑफ रियलिस्टिक प्राइस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इफेक्ट द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. It is the important therefore the broader price can be used for the tradable atom and the market price for non tradable metal. जो फॉरेन बॉर्डर की प्राइस होती है जो एक्सचेंज रेट है, लाइक द ओवर एक्सचेंज रेट इज हेयर 290. तो जो बॉर्डर $1 प्राइस को यूज़ किया जाता है बॉर्डर प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और जो डोमेस्टिकली गुड्स एंड सर्विस नॉन ट्रेडेबल उसके लिए डोमेस्टिक प्राइस को यूज़ किया जाता है. In Pakistan, the prices for tradable atom are used in the sponsors of the project are not reliable. Source is not quoted in their appraisal report. It can be suggested that economic export and import priority prices be used in evaluating the tradable inputs and output. Economists in the planning commission can compute the
most critical shadow price, and all the development agencies can be asked to apply these their project analysis. तो ये हमारे पास प्लानिंग कमीशन जो है इन शेडो प्राइस को कैलकुलेट करके फिर ऑल द डेवलपमेंट एजेंसीज कैन बी आस्क्ड टू अप्लाई दिस, तो उनको ये प्लानिंग कमीशन ये करता है और जितनी भी एजेंसीज जो प्रोजेक्ट को रन कर रही होती हैं उनको ये प्रोवाइड करता है डाटा कि वो कैसे प्रोजेक्ट को अप्रूवल कर सकते हैं. सी through the government is concerned with the distributional aspect of the project selection process. The data requirement of complete social analysis are also immense. This given the current database and absence of shadow price and conversion factor required such as analysis make it necessary to restrict the project up to complete the efficiency analysis. However, the efficiency analysis will be supplemented by quantitative social analysis till such a time the social parameter can be estimated and comprehensive social cost benefit undertaken. तो उसके बाद जब शेडो प्राइस वो कैन गेट अ शेडो प्राइस, उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो कंसर्न करती है, वो प्रोजेक्ट की सिलेक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. उसके बाद जो है शेडो प्राइस जो है करंट जो डाटा हमारा होता है उसको फॉरकास्ट करके हम फ्यूचर के बारे में उन प्राइस की कन्वर्जन होती है और एक शेडो प्राइस मैकेनिज्म बनाया जाता है. उसके बाद इस प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी को चेक करके ये प्रोजेक्ट जो होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में इम्प्लीमेंट किया जाता है. डी For the economic analysis, this is the undertaking by the public and private sector project require approval for CDWP and ECNEC. तो ये फिर ये जो मेथड्स हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स हो गया या CWP जो वर्ल्ड बैंक यूज़ करता है उनको अप्लाई किया जाता है इस डाटा के अवधि. The criteria of profitability should be restricted in three measures. They include the internal economic rate of return, net present worth और मॉडिफाइड रेशियो जो ब्रोनो मॉडिफाइड रेशियो उनको उनके जो इंडिकेटर्स हैं उनको इस डाटा पे यूज़ किया जाए. यूज़ ऑफ मॉडिफाइड ब्रोनो मेथड सर्व एज द वायबिलिटी मेजर इन सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट. उसके अंदर ये this data is also put on this variable on this formula and then we get a result from that. Sensitive analysis, which is also a prerequisite for careful economic analysis, and it is explained in section 5.8 of this unit, is a powerful tool in project approval and it is greater assistant the decision maker in pinpointing the potential area of trouble to reduce the certain form of uncertainty. उसके लिए फिर एक सेंसिटिव एनालिसिस किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट की जो अनसर्टेनिटी है उसको हाउ कैन वी टैकल द अनसर्टेनिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इसको कैसे हम सर्टन बनाएंगे. Therefore, it is recommended that the sensitive analysis should be carried over all the major public and private project. तो ये जो है सेंसिटिव एनालिसिस जो होता है नॉट ओनली यूज फॉर द पब्लिक प्रोजेक्ट बट आल्सो प्राइवेट प्रोजेक्ट में भी कि हाउ टू वही मेक जो अनसर्टेनिटी हो उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए. एंड नंबर ई इज दैट एज मेंशन अर्लियर द प्रोजेक्ट अप्रूवल सेक्शन इज फॉलोज partial land square and Venn diagram approach. इस अप्रोच को भी यूज़ कर सकते हैं टू scrutinize the project. However, it is felt by economists given the shortage of data is appropriate methodology to follow the state by stage UNIDO approach and cost benefit. तो ये डाटा को देख के फिर वो इकोनॉमिस्ट जो हैं डिसाइड करते हैं कि these are the three methods you can use in this project. One is the cost benefit analysis and net present worth method, and third one is the UNDO method, and last one is the method that is utilized for the project purpose is that partial leon square war duck method. इस method को भी use करते हैं, but these all the methods is depend upon the how much the data we available in our stay or in our basket and how can this data is utilized for made a variable and how these variable we take a ratio of these variable to get a maximum result of this project. Although the final outcome would be have a same whether the leon square approach or the UNIDO stage by stage approach is followed.
जो भी अप्रोच, ये तीनों अप्रोच जो हमने वी हैव द ब्रीफली डिस्कस इन दिस lecture. If you we use any approach from this method, the result are outcomes are same, the result are same. The advantage of the latter is that the project can be appraised at different stages. Keep in view prevailing the government objectives and the data situation. तो ये सारा डिपेंड करता है कि हमारे पास डाटा कितना है और गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है. द गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट टू maximize the national income only, then the second stage UNDO method should be used. अगर गवर्नमेंट चाहती है कि आपने जीडीपी को बढ़ाए, अपनी नेशनल इनकम को बढ़ाए, तो यूएनडीओ मेथड यूज़ करें. However, if the objective change the database improve, the subsequent stage can be undertaken. This approach would be therefore more appropriate because owing to shortage of trained staff. तो अगर हमारे पास ट्रेन स्टाफ नहीं है तो देन सिंपली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी बेटर फॉर अस. Immense demand for score time and justification is found by following methodologies. So this is the in this lecture we have also briefly discussed about what is mean by project appraisal and how we can make a project for long run and short run. There are three type of approaches is used in this project appraisal. One is the UNIDO approach, and second one is that the net present value approach, and third approach that is we use in this data is called the one talk take approach. So these are the three approaches very much used in this scenario. And Bruno method, we have also discussed about that. The little LM approach, that is calculate, that is UNDO, United Nations Industrial Development Organization. Lean Square is called the World Bank जो यूटिलाइज किया. तो these three approach we use in this technique. If these approach are used for the project appraisal, it is very beneficial for any country. And after these techniques we going toward the calculation of this technique. And thank you so much for listening my video. I hope this video is very beneficial for you. And